Hello, hello. यस सर आवाज આવે છે સર Yes. So, good afternoon, everyone. Yesterday, we were talking about how to do research, how to formulate a research problem, and then after, how to design our hypothesis and what should be done to prove our hypothesis. Now, if, for example, you have done your research and now you are writing your report. So, today we are going to talk about report writing. So, a very essential, you know, part of our research journey is research writing. Without these research writing, our research cannot culminate properly. So very important. Okay. So what are our targets when we are writing? So the first target is to introduce our readers about the strategies and designing of our research. The second thing is to make them understand the rhetorical situation of the report proposal, common elements of the proposal, etc. Then is to explain them how you did your rhetorical practical aspects, and then draft, revise it, and that's how your proposal will become complete. Okay, so lot of things has to be done even in a writing part, and many people, many scientists would consider writing more important than doing the research also. So writing a research proposal is not that simple. Okay, so once when a student gets a research topic, they are so much happy. Yeah, I got the research topic. But then after when they start doing the research, and then finally when they reach their writing part, then they have a lot of troubles. Okay, and this cartoon very well explains all about the rhetorical processes that has to be performed during the writing the process. So what is the big picture? So your proposal is explaining your proposed plan of work. How would you plan? So scope and questions, lacuna, hypothesis, aims and objectives, methodology, significance, etc. But besides that, these all we have seen yesterday, right? Other important thing is the timeline and the place of the work. So all these seems very important. And when the students and the researcher is in a writing process, okay, you have to be careful. Okay, first of all, you have to justify and plan. Okay, means you say at what time, in what time, how much you would complete, and that you have to implement, otherwise you will never finish your writing process. Then explain how your project contributes to the existing research, and these were our words. ओके, मतलब बोले तो हमारे जो वर्ड्स है वो कम पड़ जाते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने में कि हमारे रिसर्च का क्या मतलब है। जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, ज्यादातर बोल भी देते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। Then, to demonstrate that you understand how to conduct discipline specific research in an acceptable time frame, and your audience is very well
aware of what is a research proposal. Okay, they are your academic advisors, they are committee members, your examiners, etc., etc. You, if you are writing your thesis, if you are writing a paper, then your readers are very broad and different countries, and so you have to be in short very much careful in writing a research proposal. Now, one of the most significant problem that student experience during writing process is anxiety. Okay, I don't know the proper Gujarati word for this anxiety, but ઉન્માદ થઈ જાય અને પછી આપણે નાસી પાસ થઈ જઈએ ને એવું કંઈક. So this anxiety has to be controlled, and this can be done very well by stabilizing a writing schedule. Okay, start by writing freely means start writing anything whatsoever you think it is good. Okay, always keep a small notebook with you, and whenever you are having thought or something in your mind, write it down. Okay, now I have done it myself also, and that is using the recording devices. It's very easy to speak, but it is very hard to write. So what you do, you keep a recording device, and your smartphones are already having those recordings applications. So just start your recording application and record whatsoever you want to speak or whatsoever you want to write. Then there are softwares which will convert your speech into text, and then you can correct them also later on. Then compose different parts in different computer files. Yesterday I already shown you one software which makes your journey very easy to write, and that is OneNote. Okay, so follow that software very easily. Start with more clear cut section first. So wherever you feel that yes, I am good in writing this part, then start writing that part. Okay, then understand that this proposal, what you are writing, your thesis, your grant, your paper, whatsoever, that is not negotiated kind of document. Okay, so keep on revising. As much as you revise, it will become better, and at one point your guide will say that okay, now send it. Okay, so then after also you might have to revise it. So be ready to revise it for several times. Think of the proposal as an introduction to your report, thesis, or dissertation. Remember that the proposal is not a kind of any kind of contract. मतलब ये कोई contract नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है. It's all depends. We have to modify as per our research, as per our results, and lot of way. Remember that your proposal is not meant to limit ideas, but to help you think practically. Okay? Or to others also. Ask your colleagues to form a writing group. Now, this is a very important suggestion to you guys, that you make a writing group. If you write one paragraph, then send it to others. What do you think about this paragraph? Am I able to convey what I am supposed to convey? मतलब जो मुझे लिखना था, क्या मैं ऐसा लिख पाया हूं? ऐसे क्वेश्चन पूछो उनको, वो तुमको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, तुम्हारे दोस्त है. So that's a very good help. From that you can go ahead. So in a proposal there is a title first of all. After that there is an introduction or background, and that should culminate into lacuna, hypothesis, purpose or aims, and then your objectives, then review of literature, methodology, discussion, and then finally the conclusion, and then there is the bibliography. Okay, so these are the part of your writing. Now, first of all, as I said,
that if you won't make your pipeline, you will fail. So therefore, timeline and you know obeying that timeline is very very important. Okay, so keep these in your mind. Give yourself a limit. मेरे को इतने टाइम में इतना काम कर देने का है. Then only it would happen. Okay, so remember all the dates, like when you want to finish your work, when you have to submit your grant proposal, when you want to submit your paper, your guide may inform you about all these. Okay, and yes, don't be overly ambitious. ज्यादा उत्तेजित मत हो जाना. बराबर प्रैक्टिकली सोचना कि क्या मैं इस टाइम फ्रेम में कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, वरना नहीं होगा. Okay, and then you will get a negative marks in your guide's point of view or from your institute. Okay, so this timeline, what essentially it tells you is the awareness of the various element of your studies, like travel, design, testing, experimental time, negotiation time, purchasing of chemicals, instruments, drafting, redrafting, submitting to the university, submitting to the guide, submitting to the journal for paper publication. Lot of things are there in these. Okay, now after I tell you that what is writing, now let's see that how to do this writing. Okay, so these are the nuts and bolts of writing. Okay, first one is length. Now length is very important. It depends on what you are writing. If you are writing your thesis, okay, generally of 100 pages. If you are writing MSc dissertation on about 30 pages. If you are writing a paper, about 10 pages. Okay, but the theoretical situation of paper is much tougher than that of the thesis. Okay, so just don't see what is length, but you should know how much you want to write down. Okay, so length is very very essential and the first part of your planning. Second one is English. Now, most of scientific literature, as you know by now, is available in English. Okay, so you also have to prepare your presentation, your writing, your paper, your thesis, everything in English, and essentially Indian English. And we Indians follow the British English, so this is essentially a British English. Okay, you divide your thesis into topics and subtopics. But of the topic number one, introduction, then divide introduction 1.1. Okay, then divide it into further into 1.1.1, like that. So you will be better in knowing what exactly you writing down. Okay, now see, you are doing philosophy, right? You are doing PhD, that's the philosophical doctor. Okay, PhD SC नहीं लगाते, मतलब हम साइंस नहीं लगाते या आर्ट्स नहीं लगाते या कॉमर्स नहीं लगाते. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि PhD होता है. That means it's a philosophical doctor. Okay, now philosophical doctor should be able to write properly, and his writing should be the trademark. You must have read so many books, right? Yes, for example, you are reading someone great guys like Ravindranath Tagore, or you are writing Munshi Premchand, or Mirza Ghalib, as for example. What unique you see in these all cases is this, that they have their own style. Okay, हमें तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई ये तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, या ये तो शेक्सपियर का है, या तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का है, या हमारे कोई गुजराती कवि का है. बराबर. तो कैसे मालूम पड़ता है?
तो वो चीज आपको डेवलप करनी है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको डेवलप करनी है। आपको अपना टोन, आपको अपना कोहेरेंस डेवलप करना पड़ेगा। ओके, देन, क्योंकि अभी आप थीसिस लिखोगे, फिर पेपर लिखोगे, फिर आगे जाके बुक लिखोगे, तो कैसे लिखोगे जब तक आपको आता नहीं है, बराबर? सो वेरी वेरी एसेंशियल। ओके, ग्रामेटिकली, like voice, nouns, and all these English components are also very very important. Besides that, you have to make a lot of graphs, lot of pictures, lot of images, and all that. That is all come under the visual aids. Okay, so this visual aids, as for example, I have taken most of these example I have taken from my own papers and my own theses. Okay, here we are showing one event which is going on in ourselves. Okay, so how beautifully, this visual aid is kept. So same way, students coming from different subject areas need to put, say somebody is working on wildlife, so he will put a lot of different kinds of maps. Then he will put lot of different types of images also. Somebody who is doing research in chemistry, he will put lot of different types of photographs and diagrams and flow charts and etc. And same way to the other sciences also. But these visual aids are very very important, and you need to develop them original. मतलब आपको अपने आप से बनाने का है, किसी का कॉपी कर नहीं सकते, बराबर है? बिकॉज अदरवाइज यू विल बी गेटिंग ट्रैप्ड इन प्लैगियरिज्म, बराबर है? एक बहुत बुरी मुसीबत का नाम है जिसको बोलते हैं प्लैगियरिज्म, जिसमें, बराबर है, आप जब कुछ भी लिखोगे तो आपको पहला ही फरमान होगा कि उसका प्लैगियरिज्म रिपोर्ट निकलवाओ, और उसमें तुम फंस जाओगे। इसलिए कहीं से कॉपी नहीं करना है, आपको अपने आप बनाने का भी है और लिखने का भी है। Now, tone. Tone is very, very important in your style, okay? And that depends on your attitude, okay? ये एक आदमी का अपनी चीज होती है, वो कोई इसको सिखा नहीं सकता, ओके? लेकिन कुछ समझा सकते हैं, ऐसा है, बराबर? ट्राई टू स्ट्राइक अ कंसिस्टेंटली कॉन्फिडेंट टोन। जो भी टोन आप लो, लेकिन वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। हर सेंटेंस में टोन तुम्हारा बदलना नहीं चाहिए, ओके? और कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, मतलब जो आप बोल रहे हो वो पढ़ने वालों को सही लगना चाहिए, ओके? अवॉइड एन एपोलोजेटिक और एरोगेंट टोन, मतलब आपको किसी भी तरह की माफी मांगनी नहीं है, या किसी भी तरह का गुस्सा नहीं दिखाना है, वगैरह वगैरह, ओके? And be scientific most of the time. Okay, now whenever we are writing science, we need to have a reference for each and everything that we write. Okay, each and everything that we write which is not of ours. Okay, and how much is of your ours is very little. Okay, very very little means आपके थीसिस में आपका कितना होगा, तो कि खाली जो रिजल्ट सेक्शन है ना, बस उतना ही, वही आपका। बाकी इंट्रोडक्शन भी आपने कहीं से लिया है, लिटरेचर रिव्यू भी कहीं से लिया है, बराबर है? मटेरियल मेथड्स तो और किसी की ली है, और जब डिस्कशन लिखोगे वो भी किसी और का। तो फाइनली आपका हुआ क्या, वो है आपका रिजल्ट्स, ओके? सो देयरफॉर for all whatsoever you are writing, besides results, have to have references, okay? And that's very very important. Besides that, coherence is very important in the writing. मतलब coherent मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस आता है, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ आएगा, एक सेक्शन के बाद
दूसरा, तो सबके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं एक कहीं और जा रहा है दूसरा कहीं और जा रहा है. ओके, so be very very coherent and be in your writing process. Okay, so always use transitional phases. बराबर, मतलब जब भी आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप कर रहे हो तो एक दो लाइन आपको लिखनी पड़े जिसमें कि आप बताओ कि अब मैं दूसरे सेक्शन में जा रहा हूँ, ये सेक्शन खत्म हो रहा है. ओके, so like that it's very very important to have a coherence. Now let's go in writing down the specific part in your writing part. That is, the first one is title. टाइटल कोई फाइनल नहीं हो जाएगा, जो पहले लिखोगे वो आपका आइडिया होगा, धीरे धीरे करके ना फाइनल हो जाएगा, बराबर. बट टाइटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर इफ somebody is reading your paper, he will come to know about your paper by reading your title. So title should have all the components which tells you what is there in the paper. So very very important, बराबर. जैसे कि आपका नाम इंपॉर्टेंट है, आपके नाम से ही सब चलता है, बराबर. ऐसे ही एक पेपर, एक प्रपोजल, एक थीसिस, वो उसके टाइटल से चलती है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट ओरिएंट्स योर रीडर्स टू योर रिसर्च टॉपिक and indicate the type of study that you are doing. Okay, so very important. Some examples I have given. Relation of diabetes with the lipid profile in the Ahmedabad city population. Okay, so this tells you that what somebody has done in this kind of thesis. So you are aware of diabetes, you are aware of Ahmedabad city population, and you are also aware of lipid profile. So what they have done is they have studied association of lipid profile with diabetes in Ahmedabad city. Okay, so it tells you that the title itself tells us that what will be there in your paper or your report or whatsoever. Okay, other example, like, so if you are writing a review, so review का title दिया है autophagy, discovery process and its role in the detection and prevention of breast cancer. ओके, मतलब ऑटोफेगी जो एक प्रोसेस है उससे आप कैसे ब्रेस्ट कैंसर को मतलब हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो एवरी पार्ट इज कंसर्न इज कवर्ड, लाइक ऑटोफेगी कैसे डिस्कवर हुई थी, कैसे उसमें प्रोसेसेस होती है, बराबर, उसको कैसे डिटेक्शन में यूज किया जाता है, और इससे कैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की दवा बना सकते हैं, बराबर. तो द टाइटल itself orients your readers towards what is there inside, and that's where it is very very important, barabar. Then your lacuna. Okay, that is the gap. Last time I already explained to you what is lacuna. Lacuna से hypothesis बनता है. Okay, so here see how I am giving my lacuna. Okay, so however, to our knowledge, there are few reports comparing the effects of diabetes and lipid profile. Okay, मतलब मैं इन अहमदाबाद सिटी पॉपुलेशन, मतलब मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं कि ऐसा काम नहीं हुआ है. ओके, मतलब अहमदाबाद सिटी में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है जो डायबिटीज में और लिपिड प्रोफाइल का कनेक्शन कर रहा हो. उससे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं. ओके, सो देयरफॉर see here, we hypothesize that, okay, sorry, here is not visible, my photo is coming in between. So here we are saying that the two processes are also tightly coupled at the molecular level. So we are saying that these two processes are connected with each other. So that's our hypothesis. And now we will go to prove that hypothesis, and that's where
aim comes. Okay, generally many people do not write down their hypothesis. Okay, they write down is the your aim. Is for example, here it is written the present study aims to evaluate the answer anti-cancer effect of natural compounds in combination with conventional chemotherapeutic agents on the metastatic ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन. ओके, अब ये तुम सबको समझ में नहीं आएगा. ओके, बट व्हाट एसेंशियली इट मीन्स इज दिस that we want to utilize one compound, natural compound, मतलब जो नेचर में से मिलता है, प्लांट्स में से मिलता है या एनिमल्स में से मिलता है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नेचुरल कंपाउंड. उसकी हमको एंटी कैंसर इफेक्ट देखनी है. बराबर, किसके साथ में, तो के कन्वेंशनल केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स के साथ में जो डॉक्टर्स देते हैं. बराबर, तो जो डॉक्टर्स देंगे उसके साथ साथ में हम नेचुरल कंपाउंड को भी डालेंगे और उसकी इफेक्ट हम ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन पे देखेंगे कि उससे क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन, और उससे हम नतीजा निकालेंगे कि क्या ऐसे काम से ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. ओके, नाउ दिस इज अ बिग वर्क. So therefore, we have divided it into smaller aims. One bigger aim is divided into smaller aims. So that is what these all objectives are. What is objective? Dividing the aim into smaller aim. That is known as the objective. Okay, so to determine, to evaluate, like that the objectives would start. After that, you will have your methods. Okay, now when we are writing method, you need to have source of each and every chemical. आपने कौन सा यूटेंसिल, लैबवेयर, इंस्ट्रूमेंट जो भी आपने यूज किया उसका सोर्स लिखना है. जैसे कि मैंने माइक्रोस्कोप यूज किया तो वो माइक्रोस्कोप कौन सी कंपनी का था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और कौन सी कंट्री में है, ये लिखना जरूरी होता है. बराबर, हर एक केमिकल का भी. ओके, नाउ यू मे अरेंज देम इन अ फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. इफ यू आर अरेंजिंग देम इन अ लिस्ट, then it should be arranged in an alphabetic order. बराबर, you have to write down all recipes. मतलब जो कुछ भी मेथड आपने यूज की है वो सारी आपको लिखनी है, उसका फुल डिस्क्रिप्शन देना है. बराबर, आपके सब्जेक्ट्स कौन थे, आपका पॉजिटिव कंट्रोल कौन था, आपका नेगेटिव कंट्रोल कौन था. बराबर, सब्जेक्ट मतलब जैसे कि मैं डायबिटीज पे काम कर रहा हूं तो मेरे सब्जेक्ट होंगे जिसको डायबिटीज है या जिसको डायबिटीज नहीं है. तो मेरे डायबिटीज वाले पेशेंट पॉजिटिव कंट्रोल है और जो मेरे डायबिटीज एब्सेंट है उनको मैं नेगेटिव कंट्रोल बोलूंगा. बराबर, sometimes subjects and positive control are different also. Okay, then you have to classify your subject based on sex, age or any other specific condition. बराबर, जैसे कि आप बायोलॉजी में रिसर्च नहीं करते और आप कहीं फिजिक्स में कर रहे हो. ओके, और आप कोई प्रोसेस पे या कोई फिनोमिनन पे काम कर रहे हो तो आपको उस तरह से उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा. और जो भी मेथड आप एम्प्लॉय करो आपके रिसर्च में, उन सारों का आपको जस्टिफिकेशन देना है कि आपने ये मेथड ही क्यों ली. बराबर, नॉट अदर्स. व्हाई नॉट अदर्स? सो दैट्स वेरी क्रिटिकल. ओके, you have to justify each and every thing. Okay, now these are the tips how you can write down your methods properly. So for that you break down your methodology into subsections. बराबर, और जो आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड हो सकता है या तो आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड हो सकता है. जिस किसी के टाइप से आपको जाना हो, जो सही हो, बराबर, उसके हिसाब से मेथड्स को आप डिवाइड कर दो. ओके, और हर एक का टाइटल दो. ओके, और हर एक का
आप डिटेल लिखो, लेकिन बट डोंट नेवर फॉरगेट टू राइट डाउन दी you know what is called the problems. Okay, like no method is 100% proof. All methods will have some sort of problems, so those problems you need to acknowledge. Okay, after that you start writing down your review of literature. In my last lecture also I told you how to do the review of literature. Go to proper websites, download your literature, whatever, and then classify all of your literature into the topics and then into subtopics, and finally you have to derive your lacuna, then hypothesis, then aim, and then the objective. So very very important is these. Whatever. Some tips are there. Okay, as I said to you that use OneNote software. तो वन नोट में आपका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाता है. ओके, इन आवर टाइम्स देयर वाज नो वन नोट. हम तो पेपर में लिखते थे और पेपर में लिख लिख के ना सबको अरेंज करते रहे तो बड़ा पाइल अप हो जाता था. ओके, you should not use the words like Smith says these and all those. Don't blame anybody or don't overprice anybody in your writing part. Okay, uh, you don't need to include all this studies available. जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर पे आप सिर्फ 2025 की स्टडीज देखोगे तो करीब करीब मोर देन 50,000 पेपर है. तो क्या आपको सारे 50,000 पेपर पढ़ने हैं? तो आप पागल हो जाओगे. ओके, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट है बस उतना ही आपको पढ़ना है. ओके, और उतने का ही लिटरेचर रिव्यू आपको करना है. ओके, तो यू डोंट नीड टू डू एवरीथिंग. मतलब कोई भी नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते. ओके, अवॉइड पॉलिमिक्स, प्रेज एंड ब्लेम. ओके, किसी की तारीफ मत करो, किसी को ब्लेम भी मत दो इन योर राइटिंग पार्ट. ओके, so what is literature review? Is basically nothing but a scholarly conversation. मतलब आप किसी को समझा रहे हो कि भाई इस पे क्या काम चल रहा है और तुमको क्या काम करना चाहिए. Okay, so very very important part is this review of your literature. Okay, so if you are able to answer these, then there won't be a big trouble. Okay, then comes the result which is actually your part. मतलब जो आपने स्टडी करके लिखा होगा वो आपका रिजल्ट है. बाकी सबका आपने किसी किसी को पढ़ के न लिखा है. बराबर, तो यही आपका रियल कंट्रीब्यूशन है और इसी में सबसे ज्यादा चैलेंज भी लगती है. ओके, so you can describe the result based on either your methods or your objectives. Okay, give title to different sections of your result. Generally results are described based on your objectives. Okay, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको टाइटल भी दो. ओके, मेक योर ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स, इमेजेस, फिगर्स, ड्राइंग्स, बराबर, जो भी कुछ चाहिए वो बनाओ. ओके, देन one more very important thing you require in the result is the statistical analysis of your work. Okay, now this is very very critical. बराबर, I'm not expert of statistics but you have to follow the guidelines. बराबर, जो कोई टेस्ट आपको लगता है वो लगाने का है और पूरा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ढंग से करने का है. बराबर, सो लर्न डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड्स एंड हाउ टू अप्लाई देम. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर results. Is for example I am writing down here. Okay, so we have done is the chromatography, and in that we are measuring the protein concentration. So you can see that this particular protein sp4 is decreasing and sp1 is increasing. Okay, and this is our control. Okay,
सो दीज आर द पिक्चर्स, मतलब इमेजेस ली है तो उसको हमने कैसे अच्छे से उसको दिखाया है और फिर उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है और उसके लिए एक लीजेंड लिखा है, मतलब ये फिगर जो है वो क्या दिखा रही है और उसके क्या मायने हो सकते हैं, बराबर। एक्सपेरिमेंट में तुमने क्या किया था, कितने सैंपल लिए थे और कितना सिग्निफिकेंस है, ये सारी डिटेल हमको लीजेंड में लिखनी पड़ती है। ओके, सो वेरी वेरी important part is, then comes your discussion. Okay, now again discussion is not your own part, बराबर। आपको दूसरे को पढ़ के ना आपका डिस्कशन लिखने का है। ओके, जनरली फर्स्ट पैराग्राफ इज द ओवरऑल मीनिंग ऑफ योर रिजल्ट्स, मतलब अब इतने सारी टेक्निक की है आपने तो उसका कुछ मतलब होता होगा, बराबर। ओवरऑल मतलब पूरा आपको नरेट करना है कि मैंने ये टेस्ट किया तो उसका ये मतलब हुआ, ये टेस्ट किया तो इसका मतलब हुआ, इसका हुआ, और फाइनली इस सबको कंबाइन करने के बाद मेरी स्टडी का क्या मतलब होता है, दैट इज द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, एंड देन आफ्टर सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, सो व्हाट इज डिस्कशन? डिस्कशन मतलब डिस्कशन ऑफ योर रिजल्ट, जो रिजल्ट आपको मिला वो कितना सही है, कितना गलत है और उसके क्या मायने हैं, ये चीज डिस्क्राइब करता है आपका डिस्कशन। ओके, सो आपको यही लिखना है और कितनों ने ऐसा काम किया है, उनको क्या रिजल्ट मिला है और आपका रिसर्च उसमें कहाँ फिट होता है, क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं या क्या आप उनको डिनाई करते हैं, जो भी करते हो, बराबर। वो सारी चीजें आपको डिस्कशन में ले डालनी है। सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ, एंड देन फाइनली यू विल कम टू योर लास्ट पैराग्राफ। ओके, और लास्ट पैराग्राफ में हम क्या बताएंगे, हम अपना सिग्निफिकेंस बताएंगे कि भाई ये रिसर्च करने से क्या फायदा है और उसका क्या मतलब होता है, बराबर। क्या नहीं निकलता है ये रिसर्च में से, बराबर। उसका हर रिसर्च का लिमिटेशन होता है तो आपके रिसर्च का भी लिमिटेशन होगा, बराबर। और अगर कोई दूसरा ये सब्जेक्ट पे काम करना चाहे तो वो क्या करे, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। दैट इज नोन एज योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। ओके, एंड यू मे गिव एडवाइस टू दी अदर रिसर्चर्स। ओके, तो बहुत सारे एस्पेक्ट है जो लास्ट पैराग्राफ में आते हैं, एंड देन फाइनली यू विल कंक्लूड। ओके, सो कंक्लूजन इज जस्ट अ वन पैराग्राफ। यू राइट अबाउट योर सेलियंट फीचर्स, कि आपका जो रिसर्च है उसके जो मेन पॉइंट है, एकदम मेन पॉइंट, बराबर। वो 2-4 सेंटेंस उसके ले लो, फिर एक आध 2 सेंटेंस आपके मेजर आउटकम के ले लो, आपकी लिमिटेशंस एंड एडवाइस भी इसमें आ सकती है कंक्लूजन में, अगर वो मीट करती हो तब। ओके, इसके बाद में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बराबर। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये पहले ही इंट्रोडक्शन गाइड बोल देता है, इंट्रोडक्शन लिखने का चालू कर दो। अरे भाई अभी तो कुछ रिजल्ट आया नहीं है, किसका इंट्रोडक्शन लिखने का। ओके, बट पीपल मे स्टार्ट, एंड इट्स नॉट रॉन्ग, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट, because by doing so you will come to know what's going on in your area of research, and then you can revise your introduction as per. Okay, introduction is basically a foundation of your work, बराबर। मतलब अभी क्या चल रहा है आपके सब्जेक्ट में, उसको बोलेंगे हम इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर रिसर्च, मतलब जो कुछ आप अपनी रिसर्च में करने वाले हो उस सारे का आपको उनको उनको इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि आप किसी के घर में जाओ तो घर में 5 लोग हैं तो हम कैसे, वो हमको बोलेगा ना कि भाई ये फलाना है, ये मेरी दानी है, ये मेरी नाना है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये फलाना ये करता है, ये वो करता है। फिर उसको आपको घर बताएगा कि मेरे घर में 5 कमरे हैं, यहाँ वो रहता है, वो रहता है, इतना बड़ा गार्डन है, फलाना है,
ये सब जो है ना वो सब इंट्रोडक्शन बोलते हैं, और यही करना है हमको हमारे इंट्रोडक्शन में भी. ओके, देन ऑल्सो ड्रॉ सम डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट. बराबर, जैसे कि आप किसी के घर में गए हो, उसने आपको इंट्रोड्यूस किया, तो अब आके ना उसके पूरे घर का डायग्राम बना दो, ऐसे ही. ओके, सो हमको हमारे रिसर्च का भी एक डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाने चाहिए. ओके, particularly you should also include is all the recent work going on in your area of research. आपके एरिया में जो भी रिसर्च हो रहा है वो सब आपको लिखना है. ओके, फाइनली it will come to bibliography. Okay, now we are doing scientific research. हम कोई भी सेंटेंस कहीं से भी नहीं ले सकते हैं, और अगर हम लेते हैं तो उसको हमको रीराइट करना पड़ता है, और फिर उसको उसको हमको कोट करना पड़ता है. कोट करना पड़ता है मतलब बोलना पड़ता है कि ये तुमने कहाँ से लिया है. जैसे आप देखोगे, बराबर, कि ये सेंटेंस है, बराबर, तो ये सेंटेंस काडेन बैच एंड वोंग राइली ने दिया था. तो वोंग राइली एक आदमी है, या मतलब वन पर्सन है, तो इसको हमने वोंग राइली 1989 से लिखा है. बराबर, इफ देर आर टू पीपल देन वी विल राइट डाउन टू, लाइक बेंडर एंड कैडेनबैच 2000. और एक से ज्यादा है, मतलब दो से ज्यादा है, तो हम ऐसे लिखेंगे कैडेनबैच एटाल 2000. एटाल इज अ फिजिकल फ्रेंच वर्ड्स, तो एट एंड आल इसलिए हम इटलिक्स में लिखते हैं. ओके, तो इस तरह से हम टेक्स्ट में सही लिखते हैं. बराबर, और जब हम उसको पीछे जब बिबली में लिखेंगे, बिब्लियोग्राफी में, रेफरेंसेस में, तो इस तरह से लिखते हैं. बराबर, दिस इज द जर्नल थीसिस स्टाइल. हर एक जर्नल की अपनी अपनी स्टाइल होती है. ओके, तो आप सिंपली, जैसे कि एक वेब पेज है, बराबर, दैट इज कॉल्ड pubmed.gov, वहां से आप साइट करने के लिए पूरा निकाल सकते हो, पूरा कट एंड पेस्ट कर सकते हो, विच इज गुड फॉर इट. बराबर, देर आर सॉफ्टवेयर विच विल मैनेज योर बिब्लियोग्राफी, एज फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस सॉफ्टवेयर आर फ्री ऑल्सो. तो उसमें आपको बहुत कम झंझट होता है. आप खाली लिखोगे कि मेरे को थीसिस की स्टाइल चाहिए, मुझे ये जर्नल की स्टाइल, वो अपने आप ही चेंज कर देगा पूरा. ओके, एज फॉर एग्जांपल, Mendeley is one such software which is very good in doing the bibliography. ओके, इसके अलावा तो ये आपका मेन पार्ट पूरा हो गया. आपको अब टाइटल पेज बनाने का है. तो टाइटल पेज में जैसे कि आप थीसिस लिख रहे हो, तो आपका टाइटल होगा, बराबर है, फिर स्टूडेंट का नाम होगा, उसका यूनिवर्सिटी नंबर होगा, गाइड का नाम होगा, पूरा एफिलिएशन होगा, लोगो होगा, वगैरह वगैरह. ओके, फिर आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट चाहिए. उसमें आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट लगेगा, आपके गाइड का सर्टिफिकेट लगेगा, और आपके खुद का भी सर्टिफिकेट लगेगा. ओके, तो सबका सर्टिफिकेट इसमें लगता है, तो आपको लेने का है. आपको पूरा एनेक्सर देने का है, मतलब लिस्ट, सारे टॉपिक और सब टॉपिक पूरा लिस्टिंग करना है आपको पेज नंबर के साथ में. बराबर, तो ये लास्ट में करते हैं. फिर आपको ऑल्सो यू टू गिव इज द लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड लिस्ट ऑफ टेबल्स. बराबर, एब्रेविएशंस, एथिकल अप्रूवल सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई क्वेश्चनर लिया है तो क्वेश्चनर, ये सारी चीजें भी हमको उसमें डालनी पड़ती है. ओके, फाइनली आपको एक एक्नॉलेजमेंट लिखना पड़ेगा. उसमें सबसे पहले अपने गाइड को एक्नॉलेज करो, इंस्टीट्यूट को करो, फैकल्टीज को करो, जिस किसी ने आपकी मदद की उन सबका एक्नॉलेजमेंट करो. जिस किसी ने आपकी मदद की उस सबका एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए. बराबर, फाइनेंशियल सपोर्ट को भूल मत जाना. इफ योर रिसर्च इज कमिंग फ्रॉम सम ग्रांट, देन if you are not acknowledging, you are in a mistake. बराबर, they may sue you for doing that, मतलब वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं. तो फाइनेंशियल सपोर्ट को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है.
जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है साइंस में उनको शोध फेलोशिप मिलती है, तो आपको शोध फेलोशिप को एक्नोलेज करना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इज वन पेपर, मेरा एक पेपर है, बराबर, विच इज शोइंग यू the journal name is here, the company which is holding this journal, ये टाइटल है, ये सारे ऑथर है, ये एफिलिएशन है, ये एब्स्ट्रैक्ट है और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो पेपर में क्या होता है कि सब चीजें होती है, लेकिन पेपर एक पर्टिकुलर चीज के लिए लिखी जाती है। ओके, मतलब इज नॉट लॉन्ग लाइक थेसिस, मतलब वी आर राइटिंग डाउन ओनली वेरी वेरी सिग्निफिकेंट वंस ओनली, मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही हम इंक्लूड करते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, बराबर। इसमें भी इंट्रोडक्शन लगेगा, लेक्यूना लगेगा, हाइपोथेसिस लगेगा, एम्स लगेंगे, ऑब्जेक्टिव लगेंगे, मेथोडोलॉजी लगेगी, डिस्कशन लगेगा, सिग्निफिकेंस लगेगा, सारी चीजें आएगी। ओके, लेकिन पेपर लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। ओके, इसलिए हम पहले क्या करते हैं कि एक आउटलाइन बनाते हैं कि पेपर के सारे सेक्शन बना देंगे, लिख डालेंगे, ये मेरे इसमें मेरे को 4 पैराग्राफ चाहिए, इसमें 2 पैराग्राफ चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर आप पहला ड्राफ्ट बनाओगे, फिर उसको रिवाइज कराओगे, एडिट करोगे, फिर वापस जाओगे। ऐसे बहुत बार करने के बाद आपका पेपर लिखा जाता है। ओके, so your audience is a broad scientific community, and therefore it is very very essential to write down a paper properly. I already told you about its different sections, बराबर। पेपर लिखना एक जिम्मेदारी का काम होता है, therefore give yourself enough time, मतलब उसको टाइम चाहिए, बराबर। उसको बहुत बार रिवाइज करना है, डोंट लूज योर पेशेंस, कंटाल मत डालना। आपका गाइड बॉस तो बोल देगा यार ये फालतू है, जा फिर से लिख के आ, तो लिखना पड़ेगा, बराबर। तो योर क्वालिटी ऑफ राइटिंग शुड रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च, जो आपने रिसर्च किया है वो उसमें लिखना चाहिए, ये एक फाइनल पॉइंट। ओके, अब कैसे लिखोगे, तो एक अच्छा सा पेपर जो आपके जैसा हो, आपके काम जैसा हो, उसको पकड़ लो और उसके हिसाब से लिखो, तो you will have a better way of writing down the paper. Okay, so make tables, figures, graphs and other things, so in that way you will go down. As I already told you, plagiarism is very very important. You can't copy anybody's words, बराबर। किसी का भी सेंटेंस आप चुरा नहीं सकते, आपको अपने हिसाब से लिखना है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जो प्लेगियरिज्म को निकालते हैं, तो हमें वो भी यूज करने का है, बराबर है। आप एआई ज्यादा यूज नहीं कर सकते आपकी राइटिंग में, वरना वो भी पकड़ा जाएगा आपका, बराबर। तो ध्यान से लिखने का है। ओके, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बराबर है। वर्ड का और वन नोट, ये 2 प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बताते रहता हूँ, तो ये दोनों प्रोग्राम को बराबर से सीख लो, बराबर। इसके अलावा आपके रिजल्ट एनालिसिस के लिए एक्सेल चाहिए, बराबर। बिब्लियोग्राफी के लिए एन नोट या बिबटेक्स चाहिए, स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स चाहिए लाइक SPSS, ग्राफ के सॉफ्टवेयर चाहिए, बराबर। जैसे कि प्रिज्म है, बराबर, ग्राफपेड प्रिज्म सॉफ्टवेयर है। आजकल लोग पाइथन यूज करते हैं, तो पाइथन यूज करो, बराबर। जितना अच्छा सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो तो करो और उसको सीखो। प्लेगरिज्म का सॉफ्टवेयर चाहिए, ड्राइंग का सॉफ्टवेयर चाहिए, फोटो एडिटिंग, बराबर। एआई का सॉफ्टवेयर आजकल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है, बराबर। इसके बाद में आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, वो जर्नल की गाइडलाइन के हिसाब से लिखा जाता है, बराबर। सो एब्स्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ ब्रीफ आउटलाइन, बराबर, ऑफ योर एंटायर पेपर। जो भी आपको पेपर में लिखना है वो उसकी ब्रीफ आउटलाइन है, ये जैसे कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, सो वेरी नैरो डाउन। ओके, अब आपने पेपर लिख दिया,
या थीसिस लिख दी तो आपको आपका बॉस बोलेगा भाई एक कवर लेटर लिख डाल, बराबर। और हमको तो लिखना आता नहीं है, तो हमको कवर लेटर लिखने में पसीने छूट जाते हैं, बराबर। इज वेरी इंपॉर्टेंट लेटर, कवर लेटर, बराबर। यू हैव टू एक्सप्लेन that why you are submitting to that particular journal, okay, and how significant your work is, बराबर। अगर ये दो चीज नहीं है तो आपके कवर लेटर का कोई मायने नहीं होता। और फिर आपको जब आप सारी चीजें लेके गाइड के पास जाओगे तो वो बोलेगा भाई कि बेटा ये तो लिख दिया लेकिन इसमें ये नहीं है ना, फलाना नहीं है ना, इसको रिवाइज करो, ये करो। मतलब गेट रेडी फॉर द revisions and keep on revising. One day your guide would say, हाँ आप रेडी हो गए, आप सबमिट कर दे, बराबर। So that will end your work. Okay, thank you very much. I am open to the questions. चलो सवाल पूछो, सबको समझ में आ गया है ना? 100% समझ में आ गया, पर इसलिए कोई सवाल ही नहीं होता। हेलो, यस सर, यस सर। હા સવાલો નથી, આ છોકરાઓને કઈ પૂછવું નથી? કોમેન્ટ કરે છે, કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો કોમેન્ટ કરો છોકરાઓ। ના બસ સર, આજનો તમારો જે સેશન છે બહુ સરસ હતો ખરેખર। હા પ્લીઝ સર એક ક્વેશ્ચન છે। Please give example of Mendeley. Mendeley is a software which is freely available. आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और उससे आप आपकी पूरी बिब्लियोग्राफी जो है वो आप मैनेज कर सकते हो। आप गूगल में सर्च करके लिखो मेंडेली तो आ जाएगा, आप डाउनलोड कर दो उसको एंड देन लर्न, बराबर। उसको सीखने के लिए यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है। यस, और कोई क्वेश्चन? આઈ થિંક કોઈ ક્વેશ્ચન નથી। So then, thank you very much for your patience and listening to me. I hope my lecture will be useful to you. Thank you. ઓકે, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ સર। Thank you. Thank you.